Okay, good morning to all of you. So today we will going to discuss about the CAM pathway as well as today we will going to discuss about the factor affecting photosynthesis. So that two things we will going to complete in today's session. As well as in today's session we will start the respiration in plants. Okay, so after we can say production of glucose with the help of photosynthesis, we start the glycolysis process. Okay, so I'm launching poll for you as a technical check. Please answer in the poll. Is my screen visible to you and voice is clear to you? Okay, student who joined from YouTube, they can answer in the chat box of YouTube. Okay. So I think my voice is clear and screen is visible to all of you. So we will start the today's session. So with some question, please answer the question which based on your previous class. So first question, the correct sequence of cell organelles during the photorespiration. करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है ऑर्गेनेलिस का जो फोटोरेस्पिरेशन के वक्त हम उसको देखते हैं. So options are option A chloroplast, Golgi body, mitochondria. Option B chloroplast, rub, endoplasmic reticulum, uh, diastereosome. Next dictyosome. Next is the chloroplast, mitochondria, peroxisome. Next is the chloroplast, reticle, peroxisome. And I am launching poll for you. Please answer fast. जल्दी जल्दी आंसर करो. Okay, please answer fast, guys. Please answer. Am I audible? Am I audible? Please mention in chat box. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है. So I'm end this poll and this is your result. Okay, so this is your result. Okay, so here maximum people chosen option A, but option C is the answer. So chloroplast, mitochondria, and peroxisome take part in the process of photorespiration, not the chloroplast, Golgi body, and mitochondria. So coming toward the next question is photorespiration is favored by. Photorespiration क्यों होता है? Option A is the high O2 and low CO2. Option B is the low light and high O2. Option C is the low temperature and high O. Option D is the low O2 and high CO2. And I am launching poll for you guys. Please answer fast. जल्दी जल्दी आंसर कीजिए. This is a very easy question.
Okay, so I'm end this poll, and here maximum people chosen option D, but option D is the wrong option. Okay, so what is meant by photorespiration? So we already discussed the photorespiration. Respiration means where O2 involved and CO2 go outside. ठीक है, CO2 बाहर जाता है and O2 evolve होगा. ठीक है, in process of respiration, or O2 go inside. ठीक है, so that thing known as the respiration, and photo means light. Okay, so respiration happen with the help of light is known as the photorespiration. Okay, so when this photorespiration happens, when high O2 level is present in atmosphere and low CO2 level present in atmosphere, at that time photorespiration happens, because we already know Rubisco. Okay, so Rubisco have both properties. First property is the decarboxylation. Okay, okay guys, and next property is the oxygenation. Okay. Then what is meant by decarboxylation? So in case of decarboxylation, CO2 added, okay, but in case of oxygenation, the O2 added in the activity or reaction, okay, and that's why option A is the correct option here. Coming forward, so next part is the CAM pathway. Next जो part है हम देखने वाले CAM pathway. CAM pathway, and the long form of CAM pathway is Crassulacean acid metabolism. Then what is meant by Crassulacean acid metabolism? So there have we can say one group of plant. ठीक है, एक group of plant हमें देखने को मिलता है, and they are the xerophytes. ठीक है, xerophytes plant का एक group हमें देखने को मिलेगा, xerophytes. Okay, then what is meant by xerophytes, guys? So xerophyte is a plant which adopt in the warm, or we can say hot environment. ठीक है, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो हमें हॉट एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं. ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल, द जनरल एग्जांपल इज द कैक्टस. ठीक है, जैसे कैक्टस जैसा एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, लाइक ओपुनटिया. ठीक है, opuntia or opuntia, whatever you say. ठीक है, so this is the one of example for the xerophytic plant. So in this plant there have a CAM pathway going on. Why? Because where this plant situated, like in a hot or desert region. ठीक है, so वहां पर water का बहुत scarcity रहता है. There have a lot of scarcity of water. Okay, and that's why they not open their stomata in the daytime. ठीक है, they not able to open their stomata in the daytime, because if they open stomata at the daytime, then what happens? Evaporation happens. Okay, then if they not open stomata in the daytime, then how they collect CO2 from the atmosphere? तो फिर वो CO2 कैसे collect करता है, and how the processes happen, और processes कैसी होती है? So here this pathway, that is CAM pathway, working in a two shift. Okay, first shift is the night shift and next is the day shift. Okay, then how mechanism is going on in case of CAM? Okay, so in case of C4 plant, we discussed the two type of cell. Okay, where the C4 plant work, and that two type of cell are the mesophyll as well as bundle ship cell. Okay, so that also important for the, we can say, to avoid photorespiration. Okay, but in this case what happened, the temperature is the maximum. Okay, light intensity maximum. Okay, light intensity maximum. Okay, and due to maximum temperature, what happened, there have a lot of water. Okay, and that's why avoid this loss of water, the new pathway will introduce. That thing is known as the CAM pathway. उसे हम क्या कहते हैं? CAM pathway. ठीक है,
एंड दिस कैम पाथवे, जैसे हमने बोला कि दो जो है क्या बोलते हैं हम, शिफ्ट में ये काम करेगा, लाइक नाइट एंड डे. देन व्हाट हैपन इन द नाइट शिफ्ट. ठीक है, सो व्हाट हैपन इन द नाइट शिफ्ट. सो हियर नो एनी अरेंजमेंट ऑफ टू सेल सिस्टम लाइक C4 प्लांट. यहाँ पर कोई भी ऐसा टू सेल सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलेगा. देयर हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, एंड उसके अंदर नाइट और डे में सारा सिस्टम चलता है. सो व्हाट हैपन इन द नाइट टाइम. सो इन नाइट टाइम स्टोमेटा ओपन. ठीक है, नाइट टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा गेट ओपन एंड आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा CO2 गो इनसाइड. ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जैसे स्टोमेटा ओपन होता है CO2 go inside. Okay, and this CO2 we can say added into the pyruvate. ठीक है, इस CO2 को जो है वो पायरुवेट में ऐड किया जाता है. ओके, सो यू कैन सी दिस इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. ठीक है, सो इसके अंदर ऐड, पायरुवेट के अंदर ऐड किया जाएगा. सो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द वन ऑफ एंजाइम. ठीक है, and it converted into it to oxaloacetate like we already discussed in the C4 plant. जैसे C4 plant में होता है. ठीक है, so there have a phosphoenol pyruvate and उसके अंदर हम CO2 को ऐड करेंगे and it converted into the oxaloacetate. ठीक है, उसका कन्वर्शन किस में हो गया, यहाँ पर oxaloacetate के अंदर. ठीक है, then what happened next. So this oxaloacetate converted into the malate और मैलिक एसिड. ठीक है, ऑक्सैलोएसिटेट किस में कन्वर्ट हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू द मैलेट और मैलिक एसिड एंड दिस मैलिक एसिड स्टोर इनटू द वैक्यूल इन अ नाइट टाइम. ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट हैपन, फर्स्ट दे एक्सेप्ट CO2. ठीक है, यहाँ पर CO2 को एक्सेप्ट किया गया. ठीक है, सो एंड देन यहाँ पर पायरुविक एसिड आता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेप्टेज इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटेट. ठीक है, ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर कन्वर्ट किया और ऑक्सैलिक एसिड OAA के अंदर. ठीक है, एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू द मैलेट एंड दिस मैलेट और मैलिक एसिड वी कैन से स्टोर इन द वैक्यूल. ठीक है, फॉर अप टू द डे टाइम. ठीक है, मतलब जब दिन का समय नहीं आता तब तक ये स्टोर रहेगा कहां पर, वैक्यूल के अंदर. ठीक है, देन सेकंड शिफ्ट स्टार्टेड आफ्टर द नाइट. ठीक है, सब अब क्या हो गया कि सेकंड शिफ्ट हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, नाइट खत्म हो गई, डे टाइम विल स्टार्ट एंड एट दैट टाइम जो है पूरा प्रोसीजर लाइक फोटोसिंथेसिस यहाँ पर स्टार्ट होगा. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द मैलेट again converted into the pyruvate. Okay, and this pyruvate release the CO2. Okay, this pyruvate release the CO2 in a daytime. Okay, and again this pyruvate going to the reaction. ठीक है, ये फिर से pyruvate reaction के अंदर चला जाएगा. So this is the complete reaction. That reaction is known as the CAM pathway. इसे हम कहते हैं CAM pathway. ठीक है, so I am repeating one time. इसमें क्या होता है, there have two shifts. Okay, first shift is the night shift, next is the day shift. Then what happen in the night shift, they trap CO2, they open stomata and trap CO2. Okay, and उसके बाद में उसका conversion हो जाएगा मैलिक एसिड में. Okay, and that malic acid we can say store into the vacuole. Okay, and that malic acid in daytime converted into the pyruvate again. During the conversion of malate to pyruvate or pyruvate, it give the CO2 और वो क्या करता है, release the CO2 and this CO2 going into the Kelvin cycle और वो यहाँ पर क्या होता है, Kelvin cycle के अंदर ट्रांसफर होगा. So why it happened, because in daytime this plant do not able to open stomata ये दिन के समय में ओपन नहीं कर सकते. So this is all about the CAM pathway और ये सारा चीज जो है ये क्या है, CAM pathway के बारे में है. ठीक है, so is it clear guys, is it clear, give me thumbs up, give me thumbs up if it clear. give me thumbs up. ओके ओके, थैंक यू. चलो, सो आगे बढ़ते इसी के साथ. नेक्स्ट थिंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को. सो देयर हैव सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस
we go through one by one. So first factor is the CO2. ठीक है, पहला फैक्टर जो है वो CO2 है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, चलो। सो CO2 concentration is the good for photosynthesis, ठीक है, in the limited amount। ठीक है, CO2 concentration अच्छा रहता है बट एक लिमिट अमाउंट में। इफ द CO2 concentration increases और वो हायर हो जाए then it क्लोजेज द स्टोमेटा। ठीक है, वो क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है। एंड द CO2 concentration up to 1% रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज, मतलब अगर इंक्रीज इन CO2 concentration होगा तो अप टू 1% रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट इंक्रीज। बट इफ CO2 concentration increase in a very large amount then it closes the stomata। ठीक है, वो स्टोमेटा को क्लोज करेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम राइट हियर, इफ CO2 concentration increase then rate of photosynthesis also increase but there have a limit। ठीक है, उसको भी एक लिमिट रहेगा। ठीक है, if CO2 concentration increases in higher amount, ठीक है, higher amount then it closes stomata, then it closes stomata। ठीक है, तब ये क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करेगा। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट फैक्टर इज द लाइट। ओके, नेक्स्ट फैक्टर क्या है यहाँ पर, लाइट है। ओके गाइस, सो लाइट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। देन हाउ इट इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो रेड लाइट एंड ब्लू लाइट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलो, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, सो कुछ चीजें इसके बारे में हम देख लेते हैं। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर इन द इंटेंस लाइट। ओके, सो इंटेंस लाइट अगर है, ठीक है, इंटेंस लाइट अगर है, ठीक है, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। अब यहां पर क्या होता है ना कि इफ लाइट इंक्रीजेस सो मच, ठीक है, इंक्रीजेस सो मच और इन हायर अमाउंट, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर लाइट का इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ता है देन इट डेवलप फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इफेक्ट शो करेगा, उसे हम बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो फोटो ऑक्सीडेशन जो है इफेक्ट जो है वो शो करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है एक प्लांट रहता है लाइक हेलियोफाइट्स। ठीक है, सो हेलियोफाइट्स आर द प्लांट which adapted for the high intensity of light। ठीक है, so I am right here heliophytes। ठीक है, so heliophytes are the plant which adopt for high light intensity। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी के लिए अडॉप्ट है। एंड बिल्कुल इसके अपोजिट रहेंगे स्कायोफाइट्स। ठीक है, और सायोफाइट्स। ठीक है, एंड दिस सायोफाइट्स आर अडॉप्ट फॉर लो लाइट। ठीक है, ये लो लाइट के लिए अडॉप्ट रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लाइट। ओके, so next factor is the temperature। ठीक है, next factor is the temperature। You can see in this graph also light intensity against rate of photosynthesis। So if light intensity increases up to the 1 point, okay, the rate of photosynthesis also increases, but after that it go constant। Why? Because here there have a
we can say जो the number of chloroplast, ठीक है, it is the constant, और we can say it is the saturation, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उसका saturation होगा. So उसके बाद में कितना भी लाइट इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होता है, so that not increases the rate of photosynthesis, वो photosynthesis का रेट वहां पर इंक्रीज नहीं करता. ओके, सो नेक्स्ट इज द टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, फैक्टर इज द टेम्परेचर. Then optimum temperature for the photosynthesis is 20 to 35 degree Celsius. Okay, so this is known as the optimum temperature. Okay guys, ठीक है, चलो. So after 35 degree Celsius what happen, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो क्या होगा, तो उसके वजह से क्या होता है कि एंजाइम्स व्हिच प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ओके, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंजाइम प्रेजेंट्स है, ठीक है, तो आई एम राइट हियर, वन मिनट, एंजाइम्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट गेट अफेक्टेड, ठीक है, इसके ऊपर गेट अफेक्टेड, ठीक है, इसके ऊपर जो है उसका अफेक्ट होगा, एंड दैट्स व्हाई द फोटोसिंथेसिस रेट गेट डिक्लाइन आफ्टर द 35 डिग्री सेल्सियस, और इसी वजह से क्या होता है कि 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पर डिक्लाइन होगा. ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द वाटर. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, वाटर है. ओके, सो इफ द लेवल ऑफ वाटर इज अ लो, ठीक है, लेवल ऑफ वाटर अगर लो है देन व्हाट हैपन, देयर हैव अ नो फोटोसिंथेसिस हैपन, ठीक है, नो फोटोसिंथेसिस, और वी कैन से लो लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस हैपन, ठीक है, बहुत ही कम फोटोसिंथेसिस होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द O2, ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज द O2. ओके, सो इफ O2 इंक्रीजेस photosynthesis process go down, decrease, ठीक है, because photo respiration effect शो होगा यहाँ पर. ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो लीफ, ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, दैट थिंग आल्सो अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है, ये भी चीज जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करती है. सम मिनरल्स लाइक Mg, नाइट्रोजन, ठीक है, लाइक मैग्नीशियम, that mineral also affect the process of photosynthesis, वो भी photosynthesis process को affect करेंगे. So here you can see one of a diagram, यहाँ पर CO2 concentration आपको दिखाया गया है, ठीक है, and against you can see the rate of photosynthesis. So यहाँ पर the rate of photosynthesis is the good in case of C4 plant. C4 plant में ये rate of photosynthesis अच्छा रहेगा as compared to C3 plant. ठीक है, so you can see the यहाँ पर कम CO2 में भी if the level of CO2 low then C4 plant work great. ठीक है, C4 plant यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है because C4 plant adapted for that specific condition जो photo respiration हमने देखा था. Okay, so this is all about the photosynthesis lesson. If you have any type of issue, any type of doubt, you can ask me. Okay, so we moving toward and the next part, and next is the question on your screen. At the temperature of 35 degrees Celsius, what happens? Rate of photosynthesis will decline earlier than that of respiration. मतलब 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन होगा, उसके बाद रेस्पिरेशन डिक्लाइन होगा. नेक्स्ट इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल डिक्लाइन अर्लियर देन दैट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहले रेस्पिरेशन डिक्लाइन होगा एंड देन फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन होगा. देयर इज नो फिक्स पैटर्न, both decline simultaneously. Please answer this question. Okay, I'm launching poll for you. चलो जल्दी जल्दी आंसर करो इसका.
Please answer first, guys. ओके, ठीक है, चलो। I'm end this poll, okay, and this is your result. Here maximum people choose an option A. Obviously option A is the correct option, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट है। देन हाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट? ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है? बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर वन सिनेरियो, ठीक है, कंसिडर वन सिनेरियो, the temperature increases above the 35 degrees Celsius. So enzyme stop the enzyme which responsible for the photosynthesis process, okay, they stop their functioning or they have a malfunctioning in the enzyme. That's why first which thing happen? पहली चीज जो होगी वो होगी the rate of photosynthesis decline. सबसे पहला चीज होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन। आफ्टर दैट व्हाट हैपन? इफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन, सो ऑब्वियसली द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज आल्सो डिक्लाइन, ठीक है, ग्लूकोज प्रोडक्शन का रेट भी डिक्लाइन हो जाएगा। एंड इफ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज डिक्लाइन देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो डिक्लाइन, रेट ऑफ respiration also decline, okay. So that's why option A is the correct option, where rate of photosynthesis will decline earlier, ठीक है। You can see decline earlier, मतलब rate of photosynthesis क्या होता है? earlier decline होता है than the respiration and then respiration, ठीक है। तो respiration का rate जो है वो slow decline होगा, but in यहाँ पर fast decline होने वाला जो चीज है that is the rate of photosynthesis, and that's why option A is the correct option, ठीक है। Moving forward, so next part we going to discuss, that is the respiration of plant, ठीक है। अब हमें देखना है respiration to plant. So respiration in a plant, it is the process after development of glucose, ठीक है। मतलब अब क्या हो गया, हमने क्या किया in the last lesson, we develop the glucose, ठीक है। How develop the glucose we already discussed. After that the things happen like glycolysis, Krebs cycle, okay, ETS, electron transport system, इस तरीके का चीज प्लांट के अंदर जो है शुरू होता है, एंड दैट थिंग इज नोन एज द रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पर हम उसे कहते हैं रेस्पिरेशन, ओके। सो बिल्कुल टाइम नहीं गवाएंगे एंड वी स्टार्ट विद द ग्लाइकोलिसिस। अदर थिंग आई थिंक यू ऑलरेडी नो रेस्पिरेशन के बारे में, बाकी डेफिनेशन वगैरह ये चीजें पता है, उसमें टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी द कंप्लीट reaction here, ठीक है। So glycolysis is the process where we split the glucose molecule, यहाँ पर हम glucose molecule को split down करते हैं, and during the splitting of glucose molecule it converted into, because glucose molecule have a 6 carbon compound and it converted into the 3 carbon compound, and that 3 carbon compound is known as the pyruvic acid, and it is the one of we can say chain activity, or we can say it is the different step multi step reaction, ठीक है। तो यहाँ पर एक मल्टी स्टेप रिएक्शन हमें देखने को मिलती है टू स्प्लिटिंग डाउन द ग्लूकोज, एंड दैट थिंग इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस, उसको ही हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इट आल्सो नोन एज द EMP pathway. Why it known as EMP pathway? Because you can see there have a scientist Embedon, Meyerhoff and Parnas discover this pathway. That's why it is known as the EMP pathway. और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? EMP pathway कहते हैं. So this cycle, that means glycolysis pathway. It also known as the universal pathway. ठीक है, ये क्या है? एक universal pathway. ठीक है. Why it known as the universal pathway? Universal pathway हम क्यों इसे कह रहे हैं? Because it happen in the every organism. ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म में, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया,
टू यूकैरियोटिक सेल, सभी ऑर्गेनिज्म में हमें ये देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द यूनिवर्सल पाथवे। इसी वजह से हम इसको कहते हैं। देन आप बोल सकते हो, देन सर क्रेब साइकिल ये नहीं क्या यूनिवर्सल पाथवे, आर क्रेब साइकिल नॉट अ यूनिवर्सल पाथवे? ठीक है, तो क्रेब साइकिल हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ओके, एंड दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में वो जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है उस जगह पर, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी नॉट कॉल्ड यूनिवर्सल पाथवे थ्रू द क्रेब साइकिल। ठीक है, हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। छोड़ दे, मैं जो you can see the complete pathway, ठीक है। so what thing to know how this pathway, so हमें है ना ये pathway पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। so क्या चीजें पता होनी चाहिए? we want to know about the enzyme, is the activity of enzyme, like hexokinase का activity क्या है, aldolase का activity क्या है, एनोलेज का एक्टिविटी क्या है, सो दैट थिंग वी वांट टू नो, ठीक है। ये एक चीज हो गया, एंड वी वांट टू नो अबाउट द कन्वर्शन स्टेप्स, ठीक है। कन्वर्शन स्टेप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस स्टेप में किस चीज का कन्वर्शन हुआ, ठीक है। सो यू कैन सी we started from the above, so you can see the glucose here. So here glucose converted into the glucose 6 phosphate, okay, and here you can see the hexokinase enzyme utilized. यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूटिलाइज हुआ? हेक्सोकाइनेज। देन काइनेज मींस व्हेन वी ऐड द फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है हम फॉस्फेट अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द एटीपी, देन यहाँ पर लगेगा काइनेज, ठीक है। तो कहाँ पर फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं? वेयर वी ऐड द फॉस्फेट, वी ऐड द फॉस्फेट ऑन द ग्लूकोज, ठीक है। कहाँ पर ऐड कर रहे हैं? ग्लूकोज के ऊपर, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट molecule form here. Then we use the isomerase. So isomerase क्या करेगा? Isomerism, ठीक है, and that's why this glucose converted into the fructose. Then third enzyme is the phosphofructokinase, okay, so means we add again one phosphate, again हमने क्या किया? एक phosphate को add किया, ठीक है, एंड अगेन एक फॉस्फेट को हमने ऐड करने के बाद में यू कैन सी दिस इज द फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है। सो इस तरीके का एक्टिविटी जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो whenever we talk about the glycolysis process, so glycolysis process divided into the two phases. First phase, whenever we utilize the ATP, that phase is known as the investment phase. इस phase को हम क्या कहेंगे? Investment phase, ठीक है। So this phase is known as the investment phase, okay. And whenever we produce the ATP from the reaction, that phase is known as the payoff phase, okay. So like a business में हम क्या करते हैं? We invest money first, okay, then we get the benefit from it, like that, ठीक है। So here why it called investment? Because we add ATP and from here we get the ATP back, and that's why it is known as the payoff phase, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे? payoff phase कहेंगे, ठीक है। Okay guys, is it clear to all? Is it clear? Is it clear? Please give me thumbs up. Please give me thumbs up. Then we will go into the next part. Okay. Okay, ठीक है, चलो. So this is the complete reaction, complete activity. Again, you can see the different enzymes here. यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। So enzyme कौन सा कहाँ पर यूज होता है ये हमें पता है। अब how to remember this complete pathway, अब रिमेंबर कैसे करना, ये चीज बहुत जरूरी है। एंड फॉर दैट प्रोसेस वी हैव अ वन ऑफ अ ट्रिक, ठीक है। हमारे पास एक ट्रिक है, प्लीज लिसन केयरफुली। सो ट्रिक स्टार्ट विद द वन स्टोरी, दैट मीन्स देयर हैव वन बॉय एंड दैट बॉय वी कैन से फाउंड वन गर्लफ्रेंड, ठीक है। मतलब एक बॉय रहता है
and that boy found one girlfriend, and that's why उसके जो फादर रहते, so father of that boy, उनको बहुत खुशी होता है, ठीक है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कि my son have a girlfriend, मतलब उसको गर्लफ्रेंड मिल गया. So उसी स्टोरी के ऊपर, on this story we have one trick. So start with the glucose. Glucose means good. Okay, so we giving the name for glucose is the good. Okay. Next is the glucose 6 phosphate means GERB. Okay, good GERB. Okay. Next is the fructose 6 phosphate means friend. Okay, that means good girlfriend. Okay. Next is the fructose 1,6 phosphate means found. Okay, so good girlfriend found. Okay. Next is the dihydroxy acetone phosphate means dad. Okay, dad. Good girlfriend found. Dad. Again, glyceraldehyde 3 phosphate means gone. Okay, gone. 2 by, ठीक है, bisphosphoglycerate means by. Okay. Next is 3 phosphoglycerate means purple. Okay, and next 2 phosphoglycerate means paper. Okay, and next phosphoenol pyruvate means postcard. Postcard, and next pyruvate means pie. Okay, so pie means pizza actually. Okay, I think you already know this is the pizza and this portion is known as the pie. ये portion रहेगा, इसे हम कहेंगे pie. So होता क्या है in this story? So good girlfriend found. Okay, that's why dad gone to buy purple paper, postcard and pie. मतलब यहाँ पर एक अच्छा गर्लफ्रेंड मिल गया, ठीक है, इसके वजह से उसके फादर, ठीक है, किसके, वो बॉय के, दे गॉन टू बाय पर्पल पेपर पोस्टकार्ड एंड पाई. पाई का मतलब होता है पिज्जा. ठीक है, उनको इतना खुशी मिला कि वो पोस्टकार्ड और पाई लेने को भाग गए, मतलब पिज्जा लेने को भाग गए. सो दिस इज द सिंपल ट्रिक टू वी कैन से रिमेंबर कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस पाथवे. एक सिंपल ट्रिक हमने बताया कि जहां से आप ग्लाइकोलिसिस पाथवे को रिमेंबर क्यों कर सकते हो. एंड व्हाई वी वांट टू रिमेंबर इट, बिकॉज यहाँ पर स्टेप वाइज क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज टू 6 फॉस्फेट कन्वर्शन किस में हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. ठीक है, सो इज इट क्लियर इन योर माइंड? Please mention, please give me thumbs up. Clear है thumbs up तो जल्दी जल्दी. Is it clear? Is it clear? ठीक है. So this is the simple trick to remember. ठीक है, I think आपको समझ में आ गया होगा. Other things we already discussed in the previous classes. ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा ट्रेस नहीं करूंगा. ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें पता है. ठीक है, कि क्यों इसका कन्वर्शन इस तरीके से हो रहा है, तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे इतने ज्यादा. यू जस्ट वांट टू नो हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स, वो हमें कैसे ध्यान में रहते हैं. एंड यू वांट टू नो अबाउट द एंजाइम्स एक्टिविटी. बाकी चीजें इसमें ध्यान में नहीं रही तो भी चलेगा. we want to know about the investment phase, we want to know about the payoff phase, and we want to know about the how ATPs generate. यहाँ से ATP कितना जनरेट होता है वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, NADPH कितना मिलता है. सो वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द बैलेंस शीट. ठीक है, उसको हम बैलेंस शीट में डिस्कस करेंगे. सो moving forward, next is the aerobic respiration. So aerobic respiration generally happen in the 4 different steps, we can say. First is the glycolysis. It happen in the cytoplasm. Glycolysis कहाँ पर हो रहा है? Cytoplasm. After glycolysis, because for the Krebs cycle, for the TCA cycle, they require the एसिटिल कोए. ठीक है, उनको जरूरत होती है एसिटिल कोए. बट
with the help of glycolysis, we achieve or the development of pyruvic acid happens. अब यहाँ पर बना pyruvic acid है, but we want to convert into acetyl CoA because acetyl CoA is the fuel for the TCA cycle, and that's why one reaction happens, and that reaction is known as the oxidative decarboxylation. So this reaction is also known as the gateway reaction because इसी reaction के वजह से, or we can say link reaction between glycolysis and Krebs cycle. Glycolysis और Krebs cycle के बीच का ये एक link reaction. Why it's called link reaction? Because यहाँ पर क्या होता है? Here you can see pyruvic acid converted into the acetyl CoA. ठीक है? And this reaction happen. This is the location of reaction, that is mitochondrial matrix. Reaction कहाँ पर हो रहा है? ये mitochondrial matrix में हो रहा है. Next is the Krebs cycle. Okay, so this Krebs cycle happen in the matrix of mitochondria. Krebs cycle कहाँ पर हो रहा है? Matrix of mitochondria में हो रहा है. And next thing is the oxidative phosphorylation. So all this activity we will going to discuss, ठीक है, in the further slides. ठीक है. So moving forward, so this is the complete reaction of oxidative decarboxylation of pyruvate. You can see this is a pyruvate which gained from the glycolysis process. ये हमें कहाँ से मिला? Glycolysis से मिला. Okay guys. Okay. दो pyruvate हमें मिलते हैं. Okay. And here you can see it converted into the acetyl CoA with the help of enzyme pyruvate dehydrogenase complex. ठीक है. और यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? Dehydrogenase complex. And you can see NADH produced from this activity. ठीक है. So pyruvate dehydrogenase complex majorly combination of three enzymes. तीन एंजाइम उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा. ठीक है. फर्स्ट एंजाइम इज द pyruvate dehydrogenase component. ठीक है. नेक्स्ट इज dehydrolypolyl trans नेक्स्ट इज dehydrolypolyl dehydrogenase. ठीक है. कोई पूछता नहीं ये एंजाइम, सो ध्यान में नहीं रहेगा तो डोंट वरी. ठीक है. जस्ट रिमेंबर द एंजाइम pyruvate dehydrogenase complex. ठीक है. ये हमें एंजाइम पता होना चाहिए. ठीक है. So moving forward, next is the Krebs cycle test. Okay. So why it called Krebs cycle? Krebs cycle क्यों कहते हैं इसको? Because there have one scientist. The name is the Hans Krebs. ठीक है. Hans Krebs नाम का एक साइंटिस्ट था. ठीक है. So I am write the name here. Hans Krebs. Okay. And William Johnson. ठीक है. विलियम जॉनसन, इन्होंने, ठीक है, इसका डिस्कवरी किया इन 1937 एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द क्रेब्स साइकिल. और इसी वजह से इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल. ओके गाइस. ठीक है. चलो. एंड दिस क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वी कैन से साइट्रिक एसिड साइकिल, ये भी चीजें, ये भी नाम जो है हम इसको देते हैं. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड अगेन यहाँ पर चीज है कि हाउ टू रिमेम्बर थिंग्स. ठीक है. मैं उसके ऊपर ही फोकस करूंगा बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट द क्रेब्स साइकिल. ठीक है. क्या किसमें क्या हो रहा है, मैं सिंपल एक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू रिमेम्बर इट. इसको रिमेम्बर कैसे करें. सो फर्स्ट थिंग यू कैन सी हियर, we extracted acetyl CoA, we extracted pyruvic acid converted into the acetyl CoA, and this acetyl CoA accept by the oxaloacetate. ठीक है. इस acetyl CoA को किसने accept किया? oxaloacetate ने. So you can see oxaloacetate have a यहाँ पर 4 कार्बन कंपाउंड है. ओके. एंड यहाँ पर acetyl CoA आ जाता है, and this acetyl CoA develop the citrate. ठीक है. और साइट्रिक एसिड. ओके. तो फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट यहाँ पर रहता है साइट्रिक एसिड. इट इज द 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है. तो 6 कार्बन कंपाउंड रहेगा. ठीक है. एंड यहाँ पर यू कैन सी द वन ऑफ एंजाइम अकोनिटेज. ओके. एंड इट losses H2O and it develop into the cis aconitase, and cis aconitase then converted into the isocitrate converted
into the alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate converted into the succinyl CoA. Succinyl CoA converted into the succinate, then fumarate, then L-malate, and again oxaloacetate. Okay. So what is the purpose of Krebs cycle? Krebs cycle का purpose क्या है? Okay. So the purpose of Krebs cycle to develop NADH, FADH, and ATP molecule. ATP molecule तो वैसे बनता नहीं. GTP molecule develop with the help of Krebs cycle. But उसको हम ATP consider करते हैं. Okay. So this is the main purpose of Krebs cycle. हो गया clear? ठीक है. अब clear होने के बाद में which thing asked in the examination from the Krebs cycle? कौन सी चीजें पूछी जाती है? So क्या पूछा जाता है? There have a conversion steps. First thing is the conversion step. So which thing is converted into the which thing? So that thing is the important from a Krebs cycle, as well as from which step NADH develop. Okay, from which step GTP develop, from which step FADH develop. So that thing asked in the examination. बाकी चीजें नहीं पूछी जाती, but उसके लिए भी we want to remember Krebs cycle. ठीक है, उसके लिए भी हमें Krebs cycle remember करना जरूरी है. And how remember it? So we have a trick again. ठीक है, यहाँ पर भी एक जोरदार ट्रिक हमारे पास में है. And the trick is, please remember the one line. ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ. Cricket coach, okay, India, okay, appoint okay smart staff. Okay, for main office. Okay, चलो. So this is the one of line, and इसको हम co-relate करते with our Krebs cycle. So start with the citrate. Citrate mean cricket. ठीक है, so I am right here cricket. ठीक है guys, चलो. Next is the coach, means cis acconative. So from this C and A you can see the coach here. ठीक है, coach. After coach you can see the India, means isocitrate. So isocitrate means India. Okay. Next is appoint. Appoint means alpha ketoglutarate. Appoint. Okay. Next is succinyl CoA. Okay, means smart. Okay. Next is staff, means succinate. Staff means succinate. Okay. Next fumarate means for. Okay. Next malate means main. Next oxaloacetate means office. Okay. So one thing clear in this activity, कौन सा चीज clear हो गया हमारा? We easily remember the Krebs cycle. Like cricket coach India appoints smart staff for main office. Okay, so ये चीज तो clear है. ठीक है, clear है. Please give me thumbs up. Again एक चीज बताता हूँ इसमें. Please give me thumbs up. Is it clear? Give me thumbs up. जल्दी जल्दी. Is it clear?
ठीक है, चलो. So after this, how to remember which energy molecule release in which part, मतलब कौन से पार्ट से कौन सा एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ये भी जो है ध्यान में रखना जरूरी है. So you can see in this activity whenever n come, ठीक है, whenever n come in the word, that means the step release NADH. मतलब जहां पर भी यहाँ पर n आया है, इसका मतलब वहां पर क्या रिलीज हुआ है, NADH रिलीज हुआ है. You can see India, n come here, okay, n come. So here you can see the NADH release. यहाँ पर NADH release हुआ. Here again n come in the word, ठीक है, n means NADH यहाँ पर कंसीडर करेंगे हम. ठीक है, ठीक है, n means NADH. ओके गाइस, नेक्स्ट दिखता है क्या n? देयर हैव नो n, देयर हैव नो n, देयर हैव नो n. अगेन हियर यू कैन सी द n. ओके, so in next step you can see the release of NADH. n means NADH. So this thing also clear. n means NADH. जहां पर n आ गए NADH वहां पर रिलीज हो गया. अगेन then how to remember the release of FADH. ठीक है, FADH रिलीज हो गया, वो कैसे हम ध्यान में रखेंगे. सो हेयर डबल F कम, दैट मींस FADH रिलीज. जहां पर डबल F आया समझ जाना वहां पर FADH रिलीज हुआ है. ठीक है गाइस, चलो. सो नेक्स्ट तो दिस इज ऑल अबाउट दी TCA साइकिल. तो ये सारी चीजें हैं ये TCA साइकिल के बारे में. ठीक है गाइस. So, okay. So other things we will discuss in the next session. Thank you for joining. I'm launching the poll for NPS. Okay, please answer me, and you can look for a date. Okay, guys. Thank you for your response. Next chapter is the plant growth and development. Okay, and after that we will start the animal physiology. ठीक है. Okay, bye.